PCS, Criticare, and Milleth Hospital. So, thank you, Baby Chakra, for inviting me on this platform. So, today, what we are going to discuss is a very interesting and very commonly seen condition, which is called PCOD, Polycystic Ovarian Disease. पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक आम समस्या है जो काफ़ी फीमेल्स में पाई जाती है और आज के तारीख पे काफ़ी कॉमन हो गई है. सो पीसीओडी होता क्या है? जो हमारे अंडाशय होते हैं, ओवरीज जिसको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे पानी की गठाने हो जाती है और इस वजह से शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं. हमारे पीरियड्स पे असर पड़ते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ होती है. So, what exactly is this PCOD? So, basically, it's an amalgamation of your genetic factors as well as your lifestyle changes. Yeah, so let's look into the causes of PCOD. किस वजह से हमको ये PCOD डेवलप होता है? आज के तारीख पे सबसे कॉमन कॉज जो है वो है स्ट्रेस. आज की डेट पे द काफ़ी वर्किंग लेडीज़ होती है, उनके हेवी वर्किंग आवर्स होते हैं, 12-18 आवर्स, इराटिक लाइफस्टाइल होता है, दे स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड, 8 आवर्स की स्लीप हो नहीं पाती है, दे स्लीप लेट, दे गेट अप लेट. सो बेसिकली अ डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल. अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जब डिस्टर्ब हो जाता है, इट रियली अफेक्ट्स the body and this results in a lot of hormonal imbalances. फिर आता है अपना डाइट. या जंक फूड हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउअडेज. लेकिन ये जंक फूड से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये होता है. इट एक्चुअली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पीसीओडी. ये अननेसेसरी जंक फूड खाने से हम बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते हैं, एंड दैट एड्स ऑन टू द कॉजेज ऑफ डेवलपिंग पीसीओडी एंड देयर बाय डेवलपिंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस. फिर और क्या है? वेट गेन. Excessive weight gain can be one strong reason for developing PCOD. फिर कई बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ होते हैं. इन बच्चों को हमेशा एक हाई रिस्क रहता है पीसीओडी डेवलप होने का. सो दीज आर सम कॉमन फैक्टर्स जिसकी वजह से पीसीओडी शरीर में डेवलप हो सकता है. अभी लेट्स सी कि किस एज ग्रुप में ये पीसीओडी देखा जाता है. नाउ ऑन एन एवरेज, इनिशियली जो पहले के ज़माने में 25 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप में पीसीओडी कॉमन था, राइट? बट आज के डेट पे दिस सिनेरियो हैज़ completely changed. PCOD is very commonly seen in the adolescent age group also, beginning from 13 years of age. There are young girls जो हमारे OPD में आते हैं and they come with complaints of irregular periods or not getting menses, not getting menses for almost like 1.5, 2 months, 3 months. और कई पेशेंट्स होते हैं जिनको पीरियड्स आते ही नहीं हैं और सिर्फ टैबलेट्स लेने पे पीरियड्स आते हैं. सो ये होता है पीसीओडी में. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स विच वी सी इन पीसीओडी? सो कई यंग फीमेल्स को बहुत सारा एक्ने आता है फेस पे, जो छोटी छोटी फोड़ियाँ चेहरे पे डेवलप होने लगती है. उनको फेशियल हेयर होता है, इसको जिसको बोलते हैं हर्स्यूटिज्म, जो ये अपर लिप्स जो एरिया रहता है वहाँ हेयर आने लगते हैं, जॉ लाइन पे आने लगते हैं. सो ये नॉर्मली ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमको कई बार अपर लिप्स कराने पड़ते हैं, फ्रीक्वेंटली अपर लिप्स कराने पड़ते हैं. That is one common thing that you see in a typical case of polycystic ovary. Another thing is acanthosis. अब ये acanthosis nigricans होता क्या है? स्किन पे थिक वेलवेटी पैचेस डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि एंड ये कॉमनली देखा जाता है नेप ऑफ द नेक, जो गर्दन का पिछला हिस्सा होता है. फिर एक्जिला, आर्मपिट्स में डेवलप होने लगता है, ग्रॉइन एरिया में डेवलप होने लगता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन डार्क हो जाती है, थिक हो जाती है और उस पर ऐसे ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं. सो ये क्या है? दीज आर कॉमन थिंग्स जो हम नॉर्मली पीसीओडी पेशेंट्स में कॉमनली देखते हैं. अनदर थिंग इज थायराइड, एसोसिएटेड थायराइड एबनॉर्मैलिटीज. ऐसे कई पेशेंट्स को थायराइड हार्मोन इरेगुलर पाया जाता है. देन अनदर थिंग इज ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज. अभी ये चीज़ बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती है, बट दिस इज़ मोर सो इन द लेडीज़ हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, जो कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं. तो उसमें साथ में हार्मोनल, देयर आर बेसिकली मल्टीपल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस विच स्टार्ट डेवलपिंग इन द बॉडी इन पॉलिसिस्टिक ओवरी. हमारे FSH, LH लेवल्स होते हैं, थायराइड लेवल्स होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं, जो बिल्कुल इरेगुलर होने लगते हैं.
So these are commonly found in PCOD. Another important thing is weight gain. कई बार एक्सेसिव वेट गेन होने लगता है पेशेंट्स को और उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो वेट गेन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है. So basically this is, it marks the beginning of the development of hormonal imbalances in your body. Another common complaint which patients come with is back pain and leg pain. पीसीओडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बॉडी में डेवलप हो जाती है और इस वजह से लेग पेन, बैक पेन इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट व्हिच दीस पेशेंट्स कम अप विद. सो एग्जैक्टली ये पीसीओडी में हो क्या रहा है? देयर आर टू थिंग्स which are mainly developing in PCOD. Number one is hyperandrogenemia. What is this? शरीर में मेल हार्मोन्स होते हैं. फीमेल के शरीर में भी मेल हार्मोन्स होते हैं जो कुछ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, एंड्रोजन्स जो जिसको बोलते हैं, और इस वजह से ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं. अनदर थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. अभी व्हाट इज ये हार्मोन जो इंसुलिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए. बट ये पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं. सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर फाउंड इन पीसीओडी. अभी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? If you go to see ये जो PCOD के patients होते हैं, in the long run I mean to say, like let's say 10-20 years down the line, they are at a very high risk of developing diabetes mellitus in the future. They can also develop hypertension in the future. Heart related problems चालू हो सकती है. Another rare complication would be endometrial cancer. अगर आपको पीसीओडी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर होने ही वाला है, बट येस यू डू कैरी अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर. इसीलिए पीसीओडी व्हेन इट बिगिंस एट एन अर्ली एज ग्रुप, इट इज़ बेटर टू कंट्रोल पीसीओडी एट द राइट टाइम. एंड उसको अगर इग्नोर करे, उसको अगर बढ़ने दे, देन इट कैन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इन योर बॉडी. नाउ हाउ डू यू ट्रीट दिस पीसीओडी? सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एज ग्रुप को ट्रीट कर रहे हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू द अडोलेसेंट एज ग्रुप, मैं आई प्रेफर नॉट टू गिव टू मेनी पिल्स और टू मेनी मेडिसिन टू द यंगर एज ग्रुप, क्योंकि उनके लिए द मोस्ट important thing becomes lifestyle modification. Now, what exactly is this lifestyle modification? See, when there are young adolescent girls, they might be studying, they might be going to college, or they might be working, right? They might have erratic working hours, excessive work hours होते हैं, night में working hours होते हैं, erratic lifestyle. So this lifestyle modification here plays a very important role. टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, a good 8 hours sleep. You have to learn how to manage your stress. I wouldn't say कि आप stress कम करो. Stress management is more important. Another thing is your diet. So a diet modification is important. Avoid junk food. ये जो immediately Swiggy और Zomato करके immediately junk food order कर दिया, no. Say no to junk food. Control your diet. It has to be a good, well balanced diet with a good protein content in it. A nutritious diet is more important than satisfying your taste buds, right? This is one important thing. Then another thing that you need to incorporate in your lifestyle is exercise. So at least 30 to 45 minutes of lifestyle of jogging, walking, brisk walking, I would say, is necessary to keep you fit. And in fact, for those ladies जिनके body mass index ज़्यादा होते हैं, 30 and more होते हैं, they need to sincerely work on their weight loss. उनको at least 5% reduction भी अगर उनका weight loss हो जाता है तो उनके periods time पे आने लगेंगे, which is a very important thing for them. So it is important to hit the gym for those ladies जिनका body mass index ज़्यादा होता है और जिनका obesity is a bigger problem. Yes, obesity and PCOD are, they go hand in hand, right? जितना आपका obesity बढ़ेगा उतना आपका PCOD बढ़ेगा और जितना आपका PCOD बढ़ेगा उतना आपका weight gain होगा. So what you need to do is you need to break this vicious cycle. जैसे ही आप इस vicious cycle को break करेंगे, your periods will start coming on time, your hormones will start regularizing, right? So इसके लिए you need to incorporate all these lifestyle changes in your body.
Now, another thing that we can do is give contraceptive pills to regularize menses. I prefer not to do that in the younger age group, but yes, at least the ladies who are married and who are not very keen to conceive at that moment can be put on contraceptive pills. एक specific pill जिसमें content होता है cyproterone acetate. So that is very important in treating PCOD patients, especially to regularize their menses. Now the ones who are trying to conceive, कई बार पीसीओडी में प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लगता है, and for them, for such specifically for these patients, they need to be treated for infertility. उनका एक complete hormonal profile किया जाता है, their hormonal status is evaluated, and depending on that they need treatment to get pregnant. Okay, and depending upon the severity of PCOD, we decide the level of treatment. So there are a lot of other medicines which can be given in PCOD, but that is of course you need to consult your gynecologist for the same. Then another important thing is vitamin D3 supplements. So kai baar vitamin D3 is found to be very low in PCOD. So I always make it a point to include vitamin D3 supplements in these patients because they invariably land up with a lot of back pain and leg pain. I hope I have done justice to this topic, and I hope I've covered most of the the points that you would want to know on PCOD. And if you have any questions, please put them in the chat box, and I'll be happy to answer them. Any questions? Ayushi? Ayushi? Okay, yes. So, what is the difference between PCOS and PCOD? See, it's more or less the same. It's just a difference of a disease and a syndrome. It actually the terminology is different, but the meaning is the same. इसमें कोई difference नहीं होता. What are the common signs and symptoms of PCOD? Now, as I told you initially in the beginning of my talk, इसमें acne आना, फिर वो dark skin patches जो develop हो जाते हैं, and on the underarms and the groin area, the nape of the neck, and facial hair जो facial hirsutism हम जिसको बोलते हैं, कई बार upper lips का frequency बढ़ जाता है, आपको thick hair आने लगते हैं on the face and also on the jawline. So these are all important features of PCOD. Also, you might have thyroid complaints. Swelling आ जाता है throat में जो which is ऊपर से दिखाई देता है, which might not be very evident in all cases, but yes, thyroid levels have to be checked in PCOD. कुछ ladies को breast discharge भी होता है. So if you have that, a hormonal evaluation is mandatory. So what can be the high levels of androgen? Okay, what can the high levels of androgen lead to? As I said, ये सब जो features जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, acne है, facial hirsutism है, skin darkening जो हो रहा है, all this is because of high androgen levels. Also जो अपना excessive weight gain होता है, obesity develop होने लगता है. So all these are because of your high androgen levels. Are treatments available for women with PCOS? Yes, very much. But as I rightly told you, the first step to treatment is a lifestyle modification, diet changes. आप पहले वो कीजिए, उसके बाद medicines come into picture. See, without अगर आपका weight ज़्यादा है, without working on obesity, without working on weight loss, even your medicines will not work. So everything has to go side by side. आपका weight loss, आपका lifestyle modification has to go hand in hand with the medicines that are being prescribed to you for PCOD. So, how can combined hormonal contraceptive birth control pills be used to treat women with PCOS? All right. So, in PCOD, you first need to decide whether you are in that age group where you want to conceive or not. Suppose for those ladies who want to get pregnant, we do not prefer to give contraceptive pills. So for these ladies, they need to undergo treatment for infertility, which is basically a separate line of treatment wherein we need to give you medicines for ovulation to happen. बेसिकली पीसीओडी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अंडा बन के फूटता नहीं है. द ओव्यूलेशन प्रोसेस डज नॉट हैपन इन पीसीओडी एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट. So that has to be treated for those ladies who want to conceive.
But for the ones who are not keen on conceiving, or maybe the younger age group, recently married hai, or the ones who are not married and have PCOD, yes, they can be put on birth control pills. As I told you in my talk, there is something called as cyproterone acetate, which is an important content of contraceptive pills. So wo chalu kiya jata hai, and they are given in a cyclical manner, let's say for 3 months time, and then or maybe for 6 months time. So this is given to regularize your menses so that you get your menses on time. Hmm? What effect can weight loss have on women with PCOD? Okay, so basically weight loss actually plays a very important role. अगर आपका वेट 70 kg है, अगर आपने 70 kg को 65 kg पे भी आप लेकर आए, your menses will start coming on time. It's that the impact is the is weight loss on the treatment. In fact, we can keep treating you with medicines can go on for years and years for PCOD, but without weight loss you are not going to find the same effect. Weight loss has to go hand in hand with your PCOD treatment. So weight loss, as in you have to incorporate at least 30 to 45 minutes of exercise, which can be any sort of physical exercise. You can consult a physiotherapist who can guide you regarding what exercises are to be done. You can go for a brisk walk, you can hit the gym. So all these things, so absolutely weight loss is mandatory in PCOD patients. Any other question? Okay, so I think we are done here, and I'm happy to answer any more questions if you would like to. My email address is drshailidungarwal@gmail.com. I'll be more than happy to answer your emails. If you have any doubts, do let me know. Yes, you can send in a mail and I will reply back. Thank you so much, Baby Chakra. Thank you so much for having me here.